everyone. Hope you all are fit and fine, students. Yes, students, today we'll discuss chapter number 7, Our Stormy Adventure, written by Neeta Barry. So, students, before we start this chapter, let's discuss pre-reading task. Have you ever experienced a sea voyage? Voyage means, students, journey. Do you think it is enjoyable, exciting, frightening, difficult? Why? Discuss the reason for your choice with your friends. You may tick only one choice or more than one. Yes, students, we can do like this, beta. It is enjoyable and exciting. It is an adventurous journey. Oh, students, sea journey is actually a bit difficult too because no one knows the mood of the sea waves and water in the sea. Okay, so students, here beta you may tick only one choice or more than one as per your wish. Now beta, let's move on to the next part. Work in pairs and write a few words related to the sea. Students, here you have to write down some more words related to the sea. For example, students, we can add like water spray, seasickness, wind, sea storm. Okay, like this, students, we can add some words. Beta, here you can write down any word as per your wish. Now beta, let's move on to the next part. What does the title A Stormy Adventure suggest about the story? Yes, students, the title A Stormy Adventure tells about the story of a storm which made the journey adventurous for those who were on bored. Now, students, read the story of Vishal and Rohini's adventure journey to the Philippines. MV Trishna gave a gentle lurch. MV Trishna, it's the name of a ship, students. Lurch means roll on one side. एक side पे roll कर लेना. Not seasick again, exclaimed Vishal. Seasick means, students, suffering from sickness caused by the motion of शिप. सपोज स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स जो है बेटा, अगर आप बस में ट्रैवल करते हो या कार में ट्रैवल करते हो बेटा, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता, वहाँ वॉमिट फील होती है या हेडेक होता है, लाइक सेम स्टूडेंट्स. ओके. विशाल लुकिंग एट हिज यंगर सिस्टर रोहिणी इन डीप डिस्गस्ट में स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल एज शी ग्रॉन्ड. क्यों बेटा? वाई? एज शी ग्रॉन्ड एंड हेल्ड हर स्टमक. ग्रॉन्ड में स्टूडेंट्स मेक अ डीप इनआर्टिकुलेट साउंड कन्वेइंग पेन, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो स्टमक में. कांट इमेजिन वाई यू केम अलॉन्ग एट ऑल. यू श्योरली डिडंट थिंक इट वुड बी स्मूथ सेलिंग ऑल द टाइम. Rohini only made an inarticulate sound. Inarticulate means, students, not expressed clearly, and disappeared under the bedclothes. Vishal shook his head in exasperation, means irritation, and turned to look at the calendar. 2 days more to go before they touched the land. I might as well see what Papa is doing up on the bridge. Yes, beta, Vishal and his sister Rohini boarded the MV Trishna, and his sister Rohini was feeling seasick. और बेटा, वैन रोहिणी वॉज फीलिंग सी सिक, तो विशाल ने क्या बोला कि आप हमारे साथ क्यों आई हो जब आपको पता है कि ड्यूरिंग जर्नी आप कंफर्टेबल फील नहीं करती हो, तो आप हमारे साथ क्यों आई हो? क्योंकि बेटा रोहिणी कैसा फील कर रही थी, उसके स्टमक में बेटा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और इसकी वजह से बेटा वो कुछ भी जो है क्लियर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी. ओके, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि उसके कैसा फील हो रहा है. और बेटा उसने अपने आप को पूरी तरीके से बेटा कवर कर लिया था बेड क्लोथ्स के अंदर. ओके, बेड क्लोथ्स के अंदर अपने आप को पूरा कवर कर लिया था, लाइक कि वो वहाँ उसके अंदर गायब हो गई, डिसअपियर हो गई थी, लाइक. एंड बेटा इस बिहेवियर से विशाल को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी. उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि जब इसको पता है कि इसकी तबीयत जो ठीक नहीं रहती है ड्यूरिंग जर्नी, तो ये हमारे साथ यहाँ पर क्यों आई है. द तृष्णा वॉज ऑन हर वे टू द फिलीपींस. The ship was carrying a special cargo of food for the people of the small island in the South China Sea, which had been struck by a devastating typhoon a few days earlier. This had swept inland, leaving a violent trail of destruction. Yes, beta, where was the Trishna going?
Where was it going बेटा? The Trishna was going to Philippines. Trishna कहाँ जा रही थी बेटा? Philippines. And students, why? Why was it going there? The ship was carrying बेटा a special cargo of food. Ship ने क्या carry कर रखा था बेटा? A special cargo of food. For whom, students? For the people of the small island in the South China Sea. South China Sea के लिए, which had been struck by a devastating typhoon a few days earlier. Devastating typhoon means, students, we can say highly damaging. Okay, टाइफून मीन्स तूफान, कि वहाँ बहुत ज़्यादा बेटा हाईली डैमेजिंग जो है तूफान आया था, जिसकी वजह से वहाँ सब कुछ बेटा तहस नहस हो गया था. और वहाँ बेटा पीपल की हेल्प करने के लिए जो है एमवी तृष्णा क्या कही थी? द शिप वॉज कैरिंग अ स्पेशल कार्गो ऑफ food for the people. Then students, Vishal and Rohini had decided to accompany their father. Now students, what do you mean by accompany? Accompany means, students, to go with. विशाल और रोहिणी ने क्या डिसाइड किया कि हम जो अपने पापा के साथ जाएंगे. विशाल एंड रोहिणी had decided to accompany their father, Captain Kumar. Who was Captain Kumar? Vishal and Rohini's father and captain of the ship. And with Trishna. Vishal and Rohini had decided to accompany their father, Captain Kumar, this summer, although their mother was staying behind as Granny was unwell, and the children had enjoyed the sea passage. Children ने अपना sea passage journey जो है कैसे enjoy किया? With video movies and books on board. Okay, by watching video movies and by reading books on board. But now the sea looked choppy and Rohini felt rather seasick. And Rohini had accompanied their father that summer, but their mother had stayed behind to look after their grandmother, or we can say granny. The students' children had enjoyed the video movies and books on board. But students, now the sea looked choppy, and Vishal climbed on the bridge to see what his father was doing in the wheelhouse. The students, Vishal climbed the ladder a little unsteadily. Unsteadily means, students, moving slightly from side to side. Side से धीरे धीरे से, okay, moving slightly as the ship gave an unexpected roll. Getting your sea legs ready. Now students, what do you mean by sea legs? It means beta a person's ability to keep balance, okay, and feel seasick when on a boat, or we can say on moving ship. Okay, Chief Officer Green, Chief Officer ने broad smile लेते हुए क्या बोला? Getting your sea legs ready. Who was coming down? You are quite a seaman, really, with that rolling gait. Vishal tried to look modest, or we can say Vishal tried to look polite, or we can say humble. Outside the stuffy accommodation. Accommodation means, students, a room, or we can say building in which someone may live or stay. Outside the stuffy accommodation, the sea air was fresh and wet. Vishal took a deep breath. There was a spray of water on the deck as he crossed his way gingerly towards his father in the wheelhouse. Gingerly means carefully. There was a spray of water, okay, on the deck when as he crossed his way towards his father. Captain Kumar had a worried look on his face. बेटा कैप्टन कुमार बहुत ज़्यादा worried थे, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी उनको. He was staring restlessly at the barometer. Now students, what do you mean by barometer? Beta, it's an instrument used for measuring atmospheric pressure. Okay, he was staring restlessly at the barometer which had fallen steeply. He looked up at Vishal. Well, it looks like we are in rough weather soon. कि हो सकता है हमारे यहाँ बहुत ही जल्दी बहुत rough weather होने वाला है. It's typhoon time in these parts. You know, something is brewing. Means कुछ न कुछ ऐसा start होने वाला है. Brewing means, students, about to start. Now बेटा, why was Captain Kumar worried? बेटा Captain Kumar इतने worried क्यों थे? बेटा Captain Kumar was worried because the barometer had fallen steeply and there was a danger of typhoon. वहाँ पे बेटा तूफान आने का कुछ ना कुछ जो उनको डेंजर लग रहा, खतरा लग रहा था कि शायद अभी तूफान आ जाएगा यहाँ, which could have endangered the lives of crew members and his children. जिससे बेटा वहाँ के जितने भी crew members हैं और उनके खुद के children हैं बेटा उन सबको नुकसान हो सकता था. That's why, students, he was very worried. Sparks, the radio officer, rushed towards the Captain
कुमार, ओके, द रेडियो ऑफिसर स्पार्क्स जो हैं वो जल्दी से उन्होंने क्या किया, कैप्टन कुमार के पास गए विद अ शीट ऑफ पेपर, वेदर रिपोर्ट फ्रॉम मनीला। मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, कि ये वेदर रिपोर्ट है फ्रॉम मनीला। जस्ट वट आई सस्पेक्टेड, कि यस, जिस चीज़ का मुझे डाउट था, सस्पेक्ट मीन संदेह करना, डाउट होना, कि मुझे यही अंदेशा था, यही डाउट था कि यहाँ पर जो है बहुत जल्दी तूफान आने वाला है। टाइफून एल्सी इज चेपनिंग इन द पैसिफिक ओशन एंड मूविंग स्लोली इन अ नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन। मूविंग स्लोली, बहुत धीरे धीरे जो है पैसिफिक ओशन में जो टाइफून एल्सी जो है गहरा हो रहा है और ये जो है हमारी तरफ बढ़ रहा है। At this present speed, it will pass 70 miles away from us. बेटा अभी जो है ये हमसे 70 miles away है, but within 24 hours ये हम तक पहुंच जाएगा। Too close for my liking, मेरे आइडिया लगाने से मीन्स जैसा उन्होंने सोचा था उससे भी जल्दी। He shook his head grimly, वो बहुत ज़्यादा बेटा उदास हो गए ये सोचकर। The people are starving already, कि जो है साउथ चाइना सी में जो है पीपल पहले ही बहुत ज़्यादा भूखे हैं। ओके, दे आर स्टार्विंग ऑलरेडी। ही रीच्ड आउट अर्जेंटली फॉर द फोन, सिक्योर एवरीथिंग ऑन डेक, कि डेक पर सभी चीज़ जल्दी से सिक्योर कर लीजिए। लैश द कार्गो, और जो भी कार्गो है उसको अच्छे से टाई कर दीजिए, बांध दीजिए, ताकि कुछ भी सामान जो नीचे नहीं गिरे। By the afternoon, the wind had whipped up to a speed of 65 knots an hour. The sky grew dark with menacing clouds, means frightening, जिन clouds को देख के डर लगे, ऐसा बेटा वहाँ पर रफ वेदर हो गया था। Waves began to leap upwards with a terrifying ferocity. फेरोशियस तरीके से, डरावने तरीके से बेटा वेव्स बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। The sea swelled and heaved as though a monster was trapped under the enormous waves. और ऐसा फील हो रहा था स्टूडेंट्स जैसे कि उस पानी के नीचे कोई बहुत बड़ा enormous waves के नीचे जो है क्या था, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बैठा हुआ था, लाइक अ लार्ज फ्राइटनिंग क्रिएचर, जो है जो बेटा इस शिप को बार बार ऊपर नीचे टॉस कर रहा था। एज द शिप रोल्ड एंड पिच अलार्मिंगली, द spray flew wild, covering the deck with water. Students, what was the effect of bad weather on the Trishna students? Beta, the wind was whipping hard and the clouds were threatening, causing Trishna to toss, जिसकी वजह से बेटा Trishna जो है ऊपर नीचे टॉस कर रही थी, and roll and pitch alarmingly. The spray flew wild, covering the deck with water. And students, due to this rough weather, beta, Captain Kumar warned his children, डोंट लीव द कैबिन। कैप्टन कुमार ने क्या वार्निंग दी अपने बच्चों को? डोंट लीव द कैबिन, कि कैबिन में से बाहर नहीं आना है। रोहिणी वॉज फास्ट अस्लीप वेज इन टाइटली बिटवीन पिलोज, और रोहिणी ने बेटा कैसा फील करी थी वो, वहाँ उसने अपने आप को बिल्कुल टाइट, अपने आप को टक कर रखा था पिलोज के बीच में बेटा। ओके, बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। नॉकड आउट बाय सी सिकनेस, उसे बाहर बेटा क्या हो रहा है किसी भी चीज़ का पता नहीं चल रहा था, जैसे कि उसने कोई मेडिसिन ले रखी हो। आई बेट विशाल मटर्ड, होप आई वुड नॉट नीड दैम माई सेल्फ, इट वुड नेवर डू टू गेट सी sick just as he was getting his sea legs. Looked helplessly around at the cabin. Bedlam seemed to have broken loose. Bedlam means, students, noisy disorder. Drawers and books came crashing down on the ground with every lurch. हर लर्च के साथ मीन्स रोल ऑन वन साइड। ओके, रोल ऑन वन साइड, जैसे ही रोल होती थी बेटा कृष्णा, जितने भी ड्रॉर्स है, बुक्स है, वो सभी नीचे गिर जाती थी। केम क्रैशिंग डाउन ऑन द ग्राउंड विद एवरी लर्च। वाइल टेबल्स, जबकि बेटा टेबल्स एंड चेयर्स टर्न कार्ट व्हील्स, वो टर्न हो गई थी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। इवन द फ्रिज हैड स्टार्टेड अ सॉलिटरी जिग अक्रॉस द फ्लोर। बेटा जबकि फ्रिज इतना हैवी होता है उसमें भी बेटा मूवमेंट करनी स्टार्ट की, वो भी हिलना डुलना शुरू हो गया था अपनी जगह से। सडनली देयर वॉज एन अलार्मिंग क्रैश ऑन द स्टारबोर्ड साइड ऑफ द शिप। विशाल पियर्ड आउट थ्रू अ पॉट होल। विशाल ने बाहर झांक के देखा एक पॉट होल से। ही गास्प्ड, वो बहुत घबरा गया। माउंटेन्स ऑफ वेव्स सीम टू बी डिसेंडिंग सैवेजली ऑन देम। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक वायलेंट तरीके से, अनकंट्रोल मैनर से, एक माउंटेन्स की तरह जो पानी की लहरें उनकी तरफ बढ़ती आ रही हैं। द तृष्णा, ओनली 8,000 टन्स बिग, रोज हाई एंड वाज टोस्ड डाउन मार्सिलेसली। बेटा 8,000 टन्स जो है बिग जो है तृष्णा है, वो
उन मर्सीलेसली वेव्स की वजह से बेटा क्या हो रहा था, टॉस कर रही थी ऊपर नीचे। जैसे बेटा हम एक कॉइन हाथ में लेते हैं और टॉस करते हैं ना, उसको ऊपर फेंकते हैं बेटा, फिर वो नीचे आया था, लाइक सेम। ओके, द तृष्णा ओनली 8,000 टन्स बिग रोज हाई, वो एकदम ऊपर उठती थी बेटा उन लहरों की वजह से, अनॉर्मस वेव्स की वजह से, एंड वॉज टॉस डाउन मार्सीलेसली, और एकदम नीचे आ जाती थी बेटा। Every punch from the wave seemed to send her reeling. Reeling means students we can say lurch violently, toss करना, बहुत तेजी से उसको नीचे गिराना. Then as she shuddered and groaned, shuddered means tremble due to fear. Fear से बेटा जो रोहिणी बहुत घबरा रही थी. Okay, it seemed as if she might break up. Now sea and sky turned into a water blur. सी और स्काई में बेटा आपको डिफरेंस नज़र ही नहीं आ रहा था, सभी जगह ऐसा रहता कि सभी जगह पानी है, उनको पता ही नहीं चल रहा था बेटा कहाँ पर सी है कहाँ पर स्काई है, ड्यू टू रेन और वी कैन से ड्यू टू रफ वेदर देयर. नाउ सी एंड स्काई टर्न इनटू वाटरी ब्लर, ये सभी वाटरी ब्लर में जो है चेंज हो गए थे, मिक्स हो गए थे. द फुल फ्यूरी ऑफ द टाइफून वॉज कमिंग. विशाल्स हैंड्स टर्न कोल्ड एंड clammy. Clammy means students we can say unpleasantly to touch, or we can say sticky or damp students we can say. बेटा जब विशाल ने ये देखा कि द फुल फ्यूरी ऑफ टाइफून वॉज कमिंग, कि जो टाइफून है बेटा फुल फ्यूरी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा है, देन स्टूडेंट्स विशाल हैंड्स टर्न्ड कोल्ड एंड क्लैमी, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, उसके हाथ बहुत ठंडे पड़ गए थे. देन स्टूडेंट्स टू लाउड बैंग्स फॉल आउट फॉरगेटिंग हिज फादर्स इंस्ट्रक्शंस. जैसे ही बेटा उसने टू लाउड बैंग सुने, उसने अपने फादर की जो भी इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके फादर ने, वो उनको भूल गया. फॉरगेटिंग हिज फादर्स इंस्ट्रक्शंस द बॉय रेस्ड फ्रांटिकली अप टू द ब्रिज. फ्रांटिकली मीन स्टूडेंट्स वी कैन से डिसऑर्गेनाइज मैनर में, हरिडली, ओके, बहुत तेज़ी से, फ्रांटिकली अप टू द ब्रिज. देन कैप्टन कुमार वॉज पेसिंग अप एंड डाउन गिविंग क्रिस्प इंस्ट्रक्शंस टू रिड्यूस स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन. और कैप्टन कुमार जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे टू रिड्यूस स्पीड, की रिड्यूस कर दीजिए स्पीड को, एंड चेंज द डायरेक्शन, और डायरेक्शंस को जो है चेंज कर दीजिए. बेटा व्हेन कैप्टन कुमार इंस्ट्रक्टेड द चिल्ड्रन नॉट टू लीव द कैबिन, द स्टूडेंट्स दे रिमेन्ड इन द कैबिन फॉर सम टाइम. बट बेटा व्हेन विशाल हर्ड टू लाउड bangs, then beta Vishal forgot his father's instructions and ran madly, we can say, to that bridge. He nodded at Vishal. Nodded means students we can say to give someone a signal, एक signal देना. We are going, of course. Some of the cargo is damaged. कुछ cargo जो है damage हो गया, and the gangway broken loose. Now students, what do you mean by gangway? A board put between a ship and the land, so that the people can get on and off, ताकि लोग इसके ऊपर आ और जा सके, मूवमेंट कर सके वहाँ पर. That's probably what you heard. It's dragging by its wire ropes in the water and hitting the ship side hard. The Trishna veered slowly. Veered means change directions. Trishna ने बेटा धीरे धीरे अपनी directions change करने की कोशिश की. Her right side पे, buffeted by furious winds, knocked down by furious winds. Buffeted means students knocked down, we can say knocked. Vishal now found it difficult to stand. अब बेटा इतने रफ वेदर की वजह से, इतना बेटा बेकार मौसम था वहाँ पर, उसकी वजह से बेटा विशाल को बहुत मुश्किल हो रहा था उस वेदर में अपने आप को स्टेबल बनाए रखना, वहाँ पर खड़े होना. विशाल नाउ फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टैंड. ही हैड टू होल्ड टाइट, उसे बेटा बहुत टाइटली जो है पकड़ना पड़ा ऑन टू द रेल ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की रेलिंग को, टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग हर्ल्ड डाउन, ताकि वो नीचे ना गिर जाए, ताकि उसे कोई चोट ना पहुँचे. इसलिए उसको बेटा अपने आप को बहुत टाइटली तरीके से रेलिंग से उसको अपने आप को जो है पकड़ना पड़ा. अबव द din of the wind and the waves there was a terrifying sound. Once again, din means students unpleasant noise. Above the din of the wind and the waves there was a terrifying sound. बहुत terrifying sound, डरावनी sound वहाँ से आ रही थी. Once again on the starboard side, and suddenly it seemed to Vishal that all hell had broken loose. Alarms and bells rang. बेटा सभी जगह alarms और bells बजने स्टार्ट हो गए. Shrilly around, चारों तरफ means loud sound में, forcefully, and emergency stations were called, और emergency stations को बेटा inform कर दिया गया. People were rushing towards the engine room. बेटा जितने भी लोग थे वो सभी इंजन रूम की तरफ जा रहे थे. Vishal crept into a corner, out of the way, his heart pounding as loudly as the
waves. और बेटा विशाल भी बहुत घबरा गया था और बेटा उसकी हार्ट बीट भी वैसे ही फास्ट होगी जैसे कि वेव्स की पोजीशन जो बहुत फास्ट थी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. नाउ बेटा रीड इट once again to make it more clear, and then students try to read next half of the chapter. Okay students, that's all for today beta. Thanks and have a nice day.